हाय एवरीवन, दिस इज़ रजत एंड वेलकम टू एडियोलिव। आज हम इस वीडियो में आपके मैकबेथ के एक्ट 1 सीन 1 के सभी वर्कबुक आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ए एंड द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज बी, देन द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज बी पार्ट. Now let's move to question number 4 and its answer is B, and then the answer of fifth is B part. So now let's move to context questions, and the answer of question number 1 A part is the speakers are in a deserted place. They are the three witches. Okay, now let's move to B part. The animals mentioned in this scene are Graymalkin and Paddock. Graymalkin is a grey cat and Paddock is a toad. So now C part. These words mean that all that is fair for the people is foul for them, and all that is foul, that is loathsome, is fair for the witches. This is their enigmatic grade. Okay, now let's move to D part. They plan to meet Macbeth in the desolate heath. Macbeth is returning from the battlefield after defeating Macdonald. Okay, now let's move to E part. The scene is dramatically important. It establishes the mood and atmosphere for the main action of the play. Okay, now let's move to तो question आज number हमारे पास CUET की मैथ्स की क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अ फिश ट्रेवल्स ऑफ अ स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय downstream in 20 minutes. Options are 20 kilometer, 8 kilometer, 15 kilometer and 6 kilometer. So the explanation of this question is determine speed of fish is 15 plus 3 kilometer per hour. Convert the time into hours and then apply the distance formula, which is speed into time. So the answer of this question is 6 kilometer. तो ये है NTA CUET के मैथ्स की क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी, जिसमें लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड है और न्यू क्वेश्चंस फॉर्मेट भी इंक्लूडेड है इसमें। और इसमें 1200 प्लस MCQs अवेलेबल हैं और इसको पब्लिश किया है ओसवाल पब्लिकेशंस में। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके इंडेक्स में सभी चैप्टर्स के कंटेंट्स हैं और आपको लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्व्ड पेपर भी मिल जाएगा और हर क्वेश्चन को सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं इस बुक में। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। Okay, now let's move to question number 2 A part. The witches are in a desolate heath. They propose to meet Macbeth at the close of the battle. Okay, now let's move to B part. The first question asked by the first witch is when the three of them are going to meet again. Okay, so now let's move to C part. To the query of the first witch, the second witch says that they would meet when the turmoil is over and when the battle ends, with victory for one side and the defeat for the other. The answer is significant. It conveys that when the turmoil is over, they would meet and again to try to create disorder and turmoil. Okay, now let's move to D part. The scene ends on a note of eagerness and curiosity. The audience is interested in knowing how the witches would create disorder and turmoil. The spectators wonder what they will do. Okay, now let's move to last part E. Grey Malkin is a grey cat supposed to be an associate of the witches, and Paddock is a toad, another attendant of witches. So this is all about this video. If you ever liked this video, make sure to like and subscribe our channel. Thanks.